Hello, dear students. This is Kirti, and today we are going to talk about speech writing. This is another part of our long composition. Okay, so firstly, here I want to tell that it consists of 7 marks in class 12 and 6 marks in class 11. Okay, now what are the things that we are going to discuss in this video is firstly its meaning, स्पीच राइटिंग क्या होती है. ओके, नेक्स्ट इज सम वैल्यू पॉइंट्स. आई हैव मेड सम पॉइंट्स दैट आर टू बी kept in mind while writing a speech. Okay, next is there is a basic format of writing. एक बेसिक सा फॉर्मेट है जिससे हम अपनी स्पीच राइटिंग को एक इफ़ेक्टिव बना सकते हैं. ओके, एंड द लास्ट वन इज़ स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग विच इंक्लूड सम ऑफ द लाइन्स दैट यू कैन यूज़ वाइल राइटिंग अ स्पीच. कुछ ऐसी लाइन्स हैं जो एक नेसेसरी कह सकते हैं या एक इस तरीके से प्रेजेंटेबल वे है हमें अपनी स्पीच को लिखते टाइम हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, see, writing a speech is one of the easiest writing. Okay, as you have to express in a very communicative language. आपको एक communicative language यानी जिस तरीके से हम लोगों के साथ communicate करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसी तरीके से क्या है हम एक speech लिखनी होती है. So it is one of the easiest. Okay, so as I said, it is written in a communicative language, so there is no need of any high vocabulary. यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा high vocabulary की ज़रूरत नहीं होती. You just have to follow few guidelines to write a qualitative or you can say influential speech. Okay, influential speech का मतलब क्या है कि जो लोग हैं वो influence हो सके आपकी speech से. Okay, so let's start with its meaning. A speech is a formal talk that a person delivers to his audience in a public gathering. Okay, yes, it is a formal talk. Formal talk क्यों है ये? Because it is not like one, as I have said that we have to use a conversational way. We have to communicative way होना चाहिए कि जिस तरीके से हम लोगों से communicate करते हैं. But it is not like one to one. Okay, it is in front of the whole audience. It is in front of the whole gathering. Okay, so there should be a formal way. You can't use here the slang language, okay and yes and these kind of words you can't use in your speech writing. So in speech a person is there who is delivering his views. Okay, in a public gathering, एक public gathering के अंदर where people are live in front of you. Okay, वो आपके सामने खड़े हैं and you are expressing your views in front of them. Okay, so that is called a speech writing. Okay, so it may be based on any social issues or in public interest. That means it can be based on any social issues जो भी हमारी सोसाइटी के अंदर जो issues चल रहे हैं, whether it is related to globalization or pollution or deforestation or it can be rash driving. So such topics are included in social issues. Okay, or it can be in any public interest. Public interest are the topics that टेक मच पार्ट इन पब्लिक. ओके, ऐसे टॉपिक जो लोग जिनके बारे में लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बातचीत करने के लिए. विदाउट दीज थिंग्स पीपल डू नॉट इंडल्ज देयर लाइफ. अपनी लाइफ को मैटर नहीं कर पाते हैं. ओके, लाइक राइट्स. ओके, फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे टुडे एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट देयर्स, वेदर अ गर्ल इज़ देयर और बॉय इज़ देयर. सो everyone is talking about their rights. जो उनके rights हैं, okay, as a citizen of the country, so they are talking about that. और internet it is also in public interest. तो जिन भी चीज़ों के बारे में लोग interested हैं बात करने के लिए, okay, so that is included in public interest. Okay, I hope you got it. So here I want to tell that there are some value points or you can say the points which are to be kept in mind while writing a speech, because speech is something different from another writing skills. Okay, let's see one by one. First one is use a conversational style of writing. Yes, a speech is to be narrated in public. कि speech को क्या है हम एक public के अंदर narrate करते हैं. So it should have a conversational style. जिस तरीके से हम लोगों के साथ conversation करते हैं, बातचीत करते हैं, so it should be in that way only.
हेयर आई वांट टू टेल दैट इट इज़ द सेम एज एन एसे, कि जिस तरीके से हम प्राइमरी क्लासेस के अंदर एक एसे लिखते थे, इट इज़ द सेम थिंग. द डिफरेंस इज दैट एन एसे इज़ रिटन टू बी रेड, कि जब ऐसे को लिखा जाता है तो उसको पढ़ने के लिए लिखा जाता है, वेयर एज अ स्पीच इज़ रिटन टू बी हर्ड, कि एक स्पीच क्या है उसको सुनने के लिए लिखा जाता है. ओके, सो वी आर राइटिंग दैट स्पीच फॉर आर ओन पर्पज़, हम अपनी खुद के पर्पज़ के लिए लिख रहे हैं. सो इट इज़ मेंट टू बी हर्ड. ओके, सो it should be written in a conversation style of writing. Second point is no need of writing heading, date or place. Yes, I have said कि ये क्या है कि that we are writing for our own purpose, हम अपने purpose के लिए ही लिख रहे हैं. We are not giving that speech writing to anyone else. Okay, so for our knowledge, for our convenience, we are writing that speech writing in a written format. Okay, otherwise we have to just deliver it, we have to speak in front of the audience. So there is no need of writing any heading or date or the place where you have written that speech writing. Okay, so there is no need of mentioning all those things in your format. Third point is address the chief guest informal. Yes, see, when a public gathering is there, it is for a purpose, हमेशा एक purpose के लिए ही एक public gathering होती है. So if there is a school function, okay, so there must be a chief guest, वहाँ कुछ distinguished guest भी होंगे, क्योंकि आपके प्रिंसिपल भी होंगे, वाइस प्रिंसिपल्स भी होंगे, कुछ और मैनेजमेंट के मेंबर्स भी होंगे, योर टीचर्स वुड बी देयर और योर फेलो schoolmates and classmates will also be there. Okay, so you should address them, you should acknowledge them. Okay, उनको acknowledge करना बहुत ज़रूरी है. Okay, so और if there is any school assembly, तो वहाँ हम चीफ गेस्ट को हटा सकते हैं. जस्ट एड्रेस देम जस्ट ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स. सो इस तरीके से क्या है, हम अपने चीफ गेस्ट को या जो भी जो क्वालिटी मेंबर्स उस गैदरिंग के अंदर हैं उनको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट शुड बी इन अ वेरी फॉर्मल वे. फॉर्मल वे मीन्स यू शुड ऐड such word before their names like honorable principal sir or respected principal sir. So these kind of words you should use in your addressing. Okay, next is specify the occasion. Yes, I have said कि जो gathering होती है that is always held for a purpose, एक purpose के लिए होती है. So if it is any occasion, अगर किसी तरीके का occasion है, whether it can be school function or Independence Day or one Mahotsav, so you should specify that occasion. What is the reason for that gathering? You should specify that occasion in the beginning itself. Okay, next is do not repeat the points when summarizing. Yes, this is a problem in students that when they are told to summarize the topic or summarize the lesson, they use the same words as given in the books or as they have previously written. Okay, so please do not repeat those words. उन points को, उन जो भी views हैं उनको repeat मत करो. Just सम अप का मतलब क्या है, व्हाट इज़ योर फाइनल व्यू रिगार्डिंग दैट टॉपिक. आप क्या सोचते हो, क्या मैसेज उनको डिलीवर करना चाहते हो. इज़ देयर एनी अपील टू द स्टूडेंट्स. ओके, स्टूडेंट्स से अपील या जो टीचर्स हैं उनसे कोई अपील करना चाहते हो, एक वार्निंग देना चाहते हो लोगों को, या लोगों को कोई सजेशन देना चाहते हो. ओके, सो जस्ट डू नॉट रिपीट दोज वर्ड्स अगेन एंड अगेन एंड शुड नॉट मेक दैम बोर्ड. जो आपकी ऑडियंस है उनको बोर फील ना हो. सो जस्ट अवॉइड रिपीटिशन ऑफ द पॉइंट्स. ओके, नेक्स्ट इज ग्रैब द इंटरेस्ट इन द बिगनिंग इटसेल्फ. यस, जो जब हमने अपने चीफ गेस्ट को एड्रेस कर दिया, आफ्टर एड्रेसिंग द चीफ गेस्ट, नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हेन यू स्टार्ट योर views. Okay, when you are delivering when you start your expressing your views, just grab the interest of the audience in the beginning itself, so that they should listen to you. Okay, you know what is the aim of giving a speech? The aim is that you want to the person who is delivering that speech, his aim is to make the people aware about that, लोगों को aware करने के लिए. Okay, you know words have so much power. जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनके अंदर इतनी पावर होती है दैट कैन इन्फ्लुएंस एनीवन. ओके, सो द मेन एम ऑफ गिविंग अ स्पीच इज दैट
to make the people influence, okay, to influence the people, to give them a message. And the more he wants is that the audience should take back something from him, okay, उनसे कुछ लेकर जाए. What is the motive of delivering that speech? That motive should be attained by the listeners, okay, कि जो listeners हैं वो उस motive को catch कर सकें and they should grab it, okay, and they should talk about those things in through their within their family members or friends or anywhere, okay. So that is the main motive of giving a speech, okay. So it's your duty to grab the interest in the beginning itself, so that the people should listen to you carefully and willingly also, okay. Otherwise people will not listen to you and your speech will just a waste, okay. So this is about grabbing the interest. Next point is put the topic in single inverted commas. This is the fact about format, okay. When you are given a topic in your exam paper, okay, and when you are presenting it in your answer sheet, so to make your speech attractive and presentative to the examiner, you should put that topic in single inverted commas. अपने topic को single inverted commas में लिखो, so that your topic should be highlighted to the examiner, okay. This is the thing. Last but not the least is should be concluded by thanking the listeners, okay. You are taking a precious time of the gathering. आप लोगों का टाइम ले रहे हैं, आप अपनी स्पीच बोल रहे हैं, the people are listening to you carefully. So at the end of the speech you should thank them for listening to you, okay. Most of you have heard these speeches in your school functions or school assemblies also, or anywhere any club is there, okay. Many of the clubs, they organize such meetings where speech is delivered by the honored persons, okay. So just listen to them how they present their speech, and you the thing will these all the points will strike in your mind that these all these things are included in their speech. वो जो स्पीच उन्होंने कभी आपने सुनी हो, ओके, दीज ऑल पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन दैट, ओके. वो ये सब पॉइंट्स उसके अंदर इंक्लूड ऑब्वियसली होंगे, ओके. जस्ट थिंक अबाउट दीज थिंग्स, ओके. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ स्पीच. So on your screen you can see that I have made 5 points in this format. So the first point is about the first paragraph, okay. The first paragraph includes introduction and views, okay. So in this we add the addressing of the chief guest and the distinguished guest, okay. So introduction includes that addressing and acknowledging of the chief guest and principal and the other persons included in the event, okay. So whether it is the chief guest or principal or teachers, so you should acknowledge them in a very respectable form, okay. उनको honor करना, उनको respect करना, that should be the prime thing for when you are writing a speech, okay. Next is views, okay. See, in your exam paper the topic would already be given to you, okay. So you have to showcase that topic on which you are going to speak. उस topic को highlight करना by putting it into inverted commas, और ये जो topic है वो आपको starting में ही dictate करना है, so that people should not get confused कि जो person है वो किसके बारे में बात कर रहा है, okay. So you should tell them the topic on which you are going to speak in front of them, okay. So that includes in the first paragraph itself, okay. Now let's talk about second paragraph. Second paragraph के अंदर हम highlight और facts के बारे में discuss करेंगे, okay. So highlight, here you have to highlight your views by adding your facts, okay. अपनी views को highlight करना है, okay, so that the you can grab the interest of the listeners, okay. So by adding your facts means that you know so much about your topic, okay. आपने उसके ऊपर डिटेल्ड स्टडी की है, okay, and had practical knowledge about also, so that
द पीपल शुड लिसन टू यू। जब आपके पास फैक्ट्स होते हैं, आपके पास नॉलेज होती है, आपके पास वो मोटिव है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड फैक्ट्स and you have to highlight it here, okay, so that people should come to know that you are here for this specific purpose to express your views, okay, as it will make the audience listen to you carefully, okay, लोग आपको सुनेंगे and willingly also, okay. Next is second and third paragraph. Now this point you can conclude with your second paragraph also, okay. Here I have written comparison, okay. See, there will be some general topics which will be given to you in the exam. कुछ ऐसे general और simple topics होंगे जिनके बारे में आप अक्सर बातें करते रहते हैं, okay. And there you can compare the things also which would help you in enhancing your word limit also. अपनी word limit को enhance करने के लिए, क्योंकि हमारी जो word limit है यहाँ पर 150 to 200 words रहती है, okay. So comparison helps a lot, okay. Let me take an example. Like invention of online games, okay. So with the invention of online games, the physical activity among children is diminishing, okay. जो बच्चे हैं उनकी physical activity कम होती जा रही है, okay. So now you can compare the things of present life, okay, the activities of present life with the past decades, कि पास्ट डिकेड्स के अंदर बच्चे किस तरीके से अपने आप को इंडल्ज करते थे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर, एंड कंपेयरिंग इट विद टूडेज़ वर्ल्ड, ओके, कि आज के जो बच्चे हैं वो क्या हैं, आर दे सो मोटिवेटेड और आर दे फोकस्ड ऑन देयर करियर और दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम ऑन ऑनलाइन गेम्स, ओके. एंड actually this helps to make the speech more effective also, okay, as people could relate your facts. जब लोग relate करने लग जाते हैं, that means they are making interest in listening to you, okay. So like I have said in mentioning of online games, so you can write in your writing that here you can tell that online games makes the mind inactive, ओके, जो बच्चों के दिमाग है उनको थोड़ा इनएक्टिव बना देता है. चिल्ड्रन बिकम एग्रेसिव एंड एडिक्टेड ऑल्सो. जो बच्चे हैं थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं एंड दे बिकम मोर एडिक्टेड टू इट. दे स्पेंड ह्यूज टाइम wasting on these online games. There is a minimum limit of playing also, but when you pass the whole day on these online games, so it's make your mind inactive also. So like this you can present your views in your writing, okay. It will help you to relate the things with the audience. जब आप लोगों के साथ conversation करते हैं, so it will help a lot in your writing, okay. So when you will see such example of speech writing, जब आप कुछ examples सीखोगे speech writing के और in your previous exam papers, I suggest you to please download the previous year exams of exam papers of English, okay, from the portal, so that you should have a thorough practice. आप उनकी practice करिए and you will see there will be some simple questions like this, okay. इस तरीके के ही कुछ सिंपल क्वेश्चंस आपको वहाँ दिखेंगे एंड जस्ट मेक अ प्रैक्टिस ऑफ दैट एंड यू कुड कंपेयर द थिंग्स विच आई हैव टॉट यू इन दोज क्वेश्चन पेपर्स, ओके. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट थर्ड पैराग्राफ. इन दिस पैराग्राफ, see, firstly you have mentioned your views, okay. You have highlighted your facts also, what you have thought and what is your idea behind giving that speech. You have compared the things also, or you can narrate a short moral story also to the public, so that you can set an example through your story, okay. So you have given so much about the problem or the thing, okay. So when we are talking about a problem, we always go for the solution. हम solution के बारे में बात करते हैं. And when a speech is delivered, the person who is delivering that speech, he or she is giving his own ideas, his own views. So what you think about its solution, आपको एक solution वहाँ put कर सकते हैं, okay. और the remedies by which you can control those things in your life. तो इस तरीके से क्या है, एक कंक्लूज़न भी होने लगता है कि हाँ आप अपने टॉपिक को लेकर किस तरीके से कंसर्न्ड है, किस तरीके से आपने उसकी नॉलेज रखी है,
ओके, एंड व्हाट इज़ योर व्यू रिगार्डिंग दैट प्रॉब्लम. हाँ प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके, but what are your views to solve that problem, to have a secure side of that problem. Okay, इवन यू कैन गिव सम सजेशंस ऑल्सो. लोगों को खुद एक सजेस्ट कर सकते हो कि हाँ आप ऐसा करिए. ओके, टेक मिनिमम यू जस्ट मिनिमम यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स इन योर लाइफ. जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है, जो पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो इस तरीके से के जो कुछ सजेशंस हैं, ओके, यूज़ बकेट वाइल बाथिंग. तो कुछ ऐसे जो सजेशंस हैं वो आप अपने स्पीच के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं. ओके, नाउ लास्ट इज़ थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ. एज आई सेड कि जब हम सॉल्यूशन और रेमेडीज़ के बारे में बात करें, दैट मीन्स वी आर कंक्लूडिंग अबाउट द होल प्रॉब्लम, ओके, बाय गिविंग सॉल्यूशन. तो वहाँ पर क्या है कि कंक्लूडिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज़ योर फाइनल व्यू अबाउट दैट, व्हाट इज़ द एम यू वांट टू कन्वे टू द ऑडियंस. ओके, किस क्या जो पर्पस है, क्या जो रीज़न है वो आप लोगों को कन्वे करना चाहते हो. तो आपने रीज़न बता दिए, व्यू बता दिया, हाईलाइट्स बता दिए. नाउ यू आर गिविंग सम सॉल्यूशंस एंड सजेशंस टू द पब्लिक ऑल्सो. ओके, सो दैट इज़ ऑल इंक्लूडेड इन कंक्लूजन. Okay, and remember one thing, when you are concluding your speech, just end it with a thank you. Okay, just thank the audience to listen to you patiently. Okay, and by indulging your time, by uh, giving your time to your listening. Okay, so this is the thing that you can use while writing a speech. Okay, now there are some lines that will help you to write an influential speech. Okay, that we will see in our next video. Please keep watching.